Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudirayet. Tato Jayamudirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu. Nashtaprayeshu abhadreshu. Nityam Bhagavata Devaya. Nityam Bhagavata Devaya. Bhagavati Ruttama Sloke. Bhagavati Uttama Sloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam, chapter 11, verse 18. Varanendram puraskritya. Varanendram puraskritya. Brahmanai sasumangalai. Brahmanai sasumangalai. Shankaturya ninadena. Shankaturya ninadena. Brahma Goshena Chadruta. Brahma Goshena Chadruta. Pratyujagmurathir Hrishta. Pratyujagmurathir Hrishta. Pranayagata Sadvasa. Pranayagata Sadvasa. Varanendram puraskritya. Varanendram puraskritya. Brahmanai sasumangalai. Brahmanai sasumangalai. Shankaturya ninadena. Shankaturya ninadena. Brahma Goshena Chadruta. Brahma Goshena Chadruta. Pratyujagmurathir Hrishta. Pratyujagmurathir Hrishta. Pranayagata Sadvasa. Pranayagata Sadvasa. Varanendram puraskritya. Varanendram puraskritya. Brahmanai susumangalai. Brahmanai susumangalai. Shankaturya ninadena. Shankaturya ninadena. Brahma Goshena Chadruta. Brahma Goshena Chadruta. Pradyujagmurathir Hrishta. Pradyujagmurathir Hrishta. Pranayagata Sadvasa. Pranayagata Sadvasa. Translation purport by is given. Sabhe Charnarvita Vedanta Swami Srila Prabhupada Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Synonyms: Varna Indram, elephants on the auspicious mission. Varna Indram, elephants on the auspicious mission. Puraskritya, putting in the front. Puraskritya, putting in the front. Brahmanaihi, by the Brahmanas. Brahmanaihi, by the Brahmanas. Sasumangalaihi, with all auspicious signs. Sasumangalaihi, with all auspicious signs. Shankha, conch shell. Shankha, conch shell. Turya, bagal. Turya, bagal. Ninadena, by the sound of. Ninadena, by the sound of.
Brahma Goshena, by chanting the hymns of the Vedas. Brahma Goshena, by chanting the hymns of the Vedas. Of the Vedas. Cha and Cha and Adhrutha, glorified. Adhrutha, glorified. Prati, towards. Prati, Towards. Ujjagmu, proceeded hurriedly. Ujjagmu, proceeded hurriedly. Rathai, on the chariots. Rathai, on the chariots. Krishta, in cheerfulness. Drishta, in cheerfulness. Pranayagata, saturated with affection. Pranayagata, saturated with affection. Sadvasa, all respectful. Sadvasa, all respectful. Translation, they hastened, please repeat after me. They hastened toward the Lord on chariots. They hastened towards the Lord on chariots. With the Brahmanas bearing flowers. With Brahmanas bearing flowers. Before them were elephants. Before them were elephants. Emblems of good fortune. Emblems of good fortune. Conch shells and bugles were sounded. Conch shells and bugles were sounded. And Vedic hymns were chanted. And Vedic hymns were chanted. Thus they offered the respects. Thus they offered their respects. Which were saturated with affection. Which were saturated with affection. Purport. Purport. The Vedic way of receiving a great personality creates an atmosphere of respect, which is saturated with affection and veneration for the person received. The auspicious atmosphere of such a reception depends on the paraphernalia described above, including conch shells, flowers, incense, decorated elephants, and the qualified brahmanas, reciting verses from Vedic literatures. Such a program of reception is full of sincerity on the part of both the receiver and the received. Hari Om Tat Sat. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karu Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Jaya Pathak Swamin Niti Namine Namo Acharya Padaya Nitaya Kripa Pradayine Gaurakata Dhamadhaya Nagara Grama Tarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadhe Pasyatya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Hare Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana Mugam Garudi Vachalam Panganagaya Tegiri Nathirpatama Munda Sri Grundina Tarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishwaram Hari Om Tat Sat. So here we see that how VIP or supremely VIP he is being received. Just like when Guru Maharaj is coming, all these things we can see. Of course, nowadays we don't have elephants and other things, but still we have elephant procession here a few Saturdays in Mayapur. And we have this
Brahmanas chanting the Vedic hymns and the flowers and garlands on the road and decorations, all these things we can see. Awe and veneration. The affection, it is saturated with affection. We have seen saturation of so many things, but so it's enough affection you can see only where Supreme Personality of Godhead is involved in the affection. Otherwise, you cannot find a affection saturation. This is very sweet words. Saturation of affection. And veneration, of course, because the person is not an ordinary person. He's a supreme person. He's the Supreme Personality of Godhead. From his everything and everybody has been emanated. There is nothing without him. So this is most auspicious atmosphere when we receive that Supreme Personality of Godhead, and that also is very clearly revealed by Srila Prabhupada that it depends on the paraphernalia that described in the verse. It has conch shell, flowers, incense, decorated elephants, and qualified Brahmanas reciting the verses from Vedic literature. This is called a reception program. It is the real reception. When the important person whom we honor is coming, this is the way we receive. Like when we do Rath Yatra, you can see on the road, in front there are different teams, dancing, chanting, kirtan, singing, decoration, so many paraphernalias, everything will go on in the front side. So that is the way we receive the Supreme Personality of Godhead, or his representative should be received in the similar manner, so that this is the full sincerity, full affection can be exhibited and full respect can be exhibited. This includes both the person who is receiving and the person who is received, the Supreme Personality of Godhead or his representative. So when Srila Prabhupada went to different places, how they have received him by simply chanting the holy name of the Lord. That auspiciousness, all auspiciousness can be brought in when we, out of affection, ecstatically jump and chant the holy name and receive the VIP or Krishna. That is most suitable for this Kali Yuga, most suitable. So everywhere you can see out of affection and very happily everybody is chanting and receiving the spiritual masters. So this is a very beautiful symptom. It's as good as this reception that is given to the Supreme Personality of Godhead. Because nothing is better than this Hare Krishna Maha Mantra in this Kali Yuga. So that's it. We'll go to the next verse. Do we have time? We have very less time, but it's okay. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 11, verse 19. Varamukyascha satasho. Varamukyascha sataso. Yanaistadarshanotsukha. Yanaistadarshanotsukha. Lasat kundala nirbhata. Lasat kundala nirbhata. Kapola badanastriya. Kapola vadanastriya. Varamukyascha shataso. Varamukyascha satasho. Yanaistadarshanotsukha. Yanaistadarshanotsukha. Lasat kundala nirbhata. Lasat kundala nirbhata. Kapola badanastriya. Kapola vadanastriya. Synonyms. Sorry. Varamukyascha sataso. Varamukyascha shataso. Yanaistadarshanotsukha. Yanaistadarshanotsukha. Lasat kundala nirbhata. Lasat kundala nirbhata. Kapolo vadanastriya. Kapola vadanastriya. Synonyms. Varamukya, well-known prostitutes. Varamukya, well-known prostitutes. Cha and. Cha and. Chatasha, hundreds of. Chatasha, hundreds of. Yanaihi, by vehicles. Yanaihi, by vehicles.
Tat Darshana, for meeting him, Lord Sri Krishna. Tat Tat Darshana, Darshana, for for meeting meeting him, him, Lord Lord Sri Sri Krishna. Krishna. Utsukha, very much anxious. Utsukha, Utsukha, very very much much anxious. anxious. Lasat, hanging. Lasat, Lasat, hanging. hanging. Kundala, earrings. Kundala, Kundala, earrings. earrings. Nirbhata, dazzling. Nirvata, Nirbhata, dazzling. Kapola, forehead. Kapola, Kapola, forehead. forehead. Vadana, face. Vadana, Vadana, face. face. Shriya, beauty. Striya, Shriya, beauty. beauty. Translation, please repeat after me. At the same time, At At the the same same time, time, many hundreds of well-known prostitutes began to proceed on various vehicles. many many hundreds hundreds of well-known well-known prostitutes prostitutes began to began proceed to on various vehicles. various vehicles. They were all very eager to meet the Lord. They were all very all eager very to meet the eager to Lord, meet the Lord, And their beautiful faces were decorated with dazzling earrings. and and their their beautiful beautiful faces faces were were decorated with decorated with dazzling dazzling earrings, earrings, which enhanced the beauty of their foreheads. which which enhanced enhanced the the beauty of beauty their of their forehead. foreheads. Purport. Purport. We may not hate even the prostitutes if they are devotees of the Lord. Even to date, there are many prostitutes in great cities of India who are sincere devotees of the Lord. By tricks of chance, one may be obliged to adopt a profession which is not very adorable in society, but that does not hamper one's executing devotional service to the Lord. Devotional service to the Lord is uncheckable in all circumstances. It is understood herewith that even in those days, about 5,000 years ago, there were prostitutes in a city like Dwaraka, where Lord Krishna resided. This means that prostitutes are necessary citizens for the proper upkeep of the society. The government opens wine shops, but this does not mean that the government encourages the drinking of wine. The idea is that there is a class of men who will drink at any cost, and it has been experienced that prohibition in great cities encouraged illicit smuggling of wine. Similarly, men who are not satisfied at home require such conscience and if concessions, and if there is no prostitute, then such low men will induce others into prostitution. It is better that prostitute be available in marketplace so that the sanctity of society can be maintained. It is better to maintain a class of prostitutes than to encourage prostitutes within society. The real reformation is to enlighten all people to become devotees of the Lord, and that will check all kind of deteriorating factors of life. In Sri Bilvamangala Thakura, a great Acharya of Vishnu Swami Vaishnava sect, in his householder life was overly attached to a prostitute who happened to be a devotee of the Lord. One night, when the Thakura came to Chintamani's house in torrents of rain and thunder, Chintamani was astonished to see how the Thakura could come on such a dreadful night after crossing a foaming river which was full of waves. She said to Thakura Vilvamangala that his attraction for the flesh and bone of an insignificant woman like her would be properly utilized if it could be diverted to the devotional service of the Lord to achieve attraction for the transcendental beauty of the Lord. It was a momentous hour for the Thakura, and he took a turn towards spiritual realization by the words of the prostitute. Later on, the Thakura accepted the prostitute as a spiritual master. And in several places of his literary work, he has glorified the name Chintamani, who showed him the right path. In the Bhagavad Gita 9.32, the Lord says, O son of Pritha, even the low-born Chandalas and those who are born in a family of unbelievers and even the prostitutes shall attain perfection of life if they take shelter of unalloyed devotional service unto me. Because in the path of devotional service, there are no impediments due to degraded birth and occupation. The path is open for everyone who agrees to follow it.
It appears that prostitutes of Dwaraka were so eager to meet the Lord were all his unalloyed devotees. Thus, they were all on the path of salvation, according to the above version of Bhagavad Gita. Therefore, the only reformation that is necessary in society is to make an organized effort to turn the citizens into devotees of the Lord, and thus all good qualities of the denizens of heaven will overtake them in their own way. On the other hand, those who are non-devotees have no good qualification whatsoever. However, they may be materially advanced. The difference is that the devotees of the Lord are on the path of liberation, whereas the non-devotees are on the path of further entanglement in material bondage. This is the citizen, the criterion of advancement of civilization is whether the people are educated and advanced. The criterion of advancement of civilization is whether the people are educated and advanced on the path of salvation. Hari Om Tat Sat. So beautiful purport. All the points Srila Prabhupada has cited here in this purport, that how the prostitutes are, as important as the police department in the government, in the city, to keep the city, maintain its purity. For want of some of the persons, generally the Vaishyas, they travel from one place to another place for their businesses. So if the prostitutes are not maintained at different cities by the government, then what happens is these particular businessmen, they will go and exploit the family girl, and they will create prostitutes within the society, and the society will, no longer remain civilized society. So this is also is maintained. 5,000 years ago, we are seeing now here, that too in the Dwaraka city we are seeing, just see. Okay, in the Dwaraka city we are seeing the prostitutes, how beautifully they have decorated themselves and how much they are obliged to be attracted to Krishna, and they came to receive Krishna, leaving their money earning business, everything they left. So this is the spontaneous affection towards Krishna. So it doesn't matter on the material plane what we are doing with the body, but as long as we are spontaneously attracted affectionately to Krishna or the representative of Krishna, that person should be considered a great devotee, a sadhu. And whatever he does externally is never ever considered on any criteria, good or bad. These persons are transcendental. So the prostitutes mentioned here are not ordinary persons. On one hand, they're like the pigs in the Vrindavan are considered scavengers to clean the, dama. So similarly, here also the prostitutes maintains the purity of the entire city family girls because of these ladies are prostitutes, and this is maintained by government. It is not that, okay, it is unauthorized, this, that, and all. Okay, men cannot control his sex, and he should pollute other family ladies. So that should be avoided first and foremost. So for that, either you have to purify the men or you have to keep him away. Like smoking, we say nowadays it's restricted everywhere, even in the airport and everywhere, no smoking generally. But you cannot stop them completely from smoking. There are few rogues and rascals, those who will smoke. And for them, there is a separate chamber is given. Okay, you go and smoke there. Okay, and don't pollute this atmosphere of the citizens. In the similarly, there is a prostitute street separately maintained by the government. So you go and live there so that these rascals who cannot control their sex may go there, and they should not pollute the society from their chastity. So this is one of the very important thing, and very beautifully Srila Prabhupada is quoting Vilvamangala Thakur, who has accepted Chintamani as a spiritual master, and she was a prostitute. Just see. And when Krishna visited the first time Mathura, at that time also the Kubja, she was a prostitute. And how she so affectionately, receives Krishna and offers, this is quite amazing. So now also in today's world,
I heard in North India, one of the famous heroine is initiated by His Holiness Gopalakrishna Goswami Maharaj. So these spiritual masters, they know, okay, outwardly what kind of probation or profession that you are in, that doesn't matter. Internally, you are a soul, so you should be a devotee of Krishna. And when there is Krishna, they are so much attracted. They don't care, okay, by seeing me, somebody may be happy. By seeing me, somebody may not be happy. By seeing me, somebody may hate me. Nothing matters. They gave up their own, money earning business and everything. And they, hastily rushed towards Krishna. Oh, with the full of affection, saturated affection for Krishna. After all, the prostitutes are very fortunate that they have only one person to show complete affection, and that is Krishna. They are more fortunate. They can show all the affection, not with their husband, wife, nothing. They don't have. So they can give their full affection to Krishna, fully, 100%. So this is the saturated affection that they had given, and they rushed towards Krishna hastily. And devotional service is the only thing that can, not be checked in any circumstances, whether you are a prostitute or you are a, barber or whatever status your life may be, whatever you are treated in society as, nothing matters when it is coming to devotional service. Ahaituki apratihata yayatma suprasidati. That is devotional service. Bhakti. The Bhakti Yoga Adokshaje. The devotional service should be performed to the Bhakti Yoga. Through the Bhakti Yoga should be performed to Adokshaja. Adokshaja means Krishna who cannot be conceived through all so-called senses. Okay, so this bhakti is totally transcendental, and anybody engaging their senses in that particular bhakti is called Hrishikena Shevaram Bhakti Uchate. That is called bhakti. So we have to engage all our senses irrespective of what status and what occupation and what probation or profession that we are in the material world, in which society we are. Nothing matters. What matters is, are you performing devotional service? Samsiddhi Haritoshanam. By all the performance of activities with the senses, are you satisfying Vishnu or Krishna? That only matters. Not that are you following regulative, this Vedas, are you following according to religious principles, do you perform all the rituals? Nothing matters. But do you make an attempt to satisfy Krishna? And Krishna, he is not very difficult to be satisfied. He said simply Bhaktya Mamavi Janati. And what is Bhakti? Prahlad Maharaj has very clearly told. Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Archanam, Padanam, Archanam, Vandanam, Pada Sevanam, Sakyam, Atma Nivedanam. That's all. Only 9 devotional service. And in that one devotional service, Narad Muni said, if you take it seriously, all other devotional service will fall into place automatically. For example, if you start chanting Hare Krishna Mahamantra loudly, the Shravanam comes automatically, not only the hearing of the holy name by you, but also the hearing of the holy name by all the living entities around. Those who have tongue and cannot vibrate the holy name, they are all benefited. So in this way, the devotional service is the easiest one which can be performed, especially the chanting the holy name of the Lord. You don't need to have even a patram, pushpam or phalam or toyam also to offer. Simply chant Hare Krishna and you can satisfy the senses of Krishna. In this way, Krishna will turn towards you and see, who is that calling me affectionately? So he will also hastily come towards you. When we move one step towards Krishna, Krishna moves 10 steps towards us. And his steps, in 3 steps, he has measured the whole universe and took away from Bali Maharaj. Such a personality is 10 steps. And what to speak of our one step, very teeny, which is not even visible. But swalpam abhyasya dharmasya trayato mahato bhaya. With the teeny step, you perform only one step also. It is noticed by Krishna. And it saves you from the greatest danger of the birth, death, old age, and disease. This is so wonderful, No chance was given to living entities before Lord Chaitanya. Such a wonderful chance. And with affectionate, saturated affectionate, means all affection is only for Krishna. And they have hastily come. They gave up all their
sleeping, resting, eating, talking, everything they gave up. Such exalted personalities we saw in the previous verses. They gave up all their important household works and the so-called important works and meetings and normal work of life. They totally, they have totally stopped their activity and hastily rushed towards Krishna. This is the true affection. The affection is pulling such a force that whatever most important seemed to be totally unimportant, and they just dropped it. They dropped their life also. In Vrindavana, the gopis, when Krishna was playing the flute, they dropped their body also and went. That is called a true affection. So this is the true affection. And Prabhupada is also quoting about the prostitute very beautifully. Another analogy here, the government is encouraged the drinking of wine. Because if they don't make it, people will start making wine at home. At any cost, they will drink. The drunkards will be there. It is not that the drunkards is there only because of the wine shops. The wine shop is there because of the drunkards. And why the government is charging so heavy time? Not for earning money on taxes. Of course, nowadays the politicians also don't understand. So that it will be discouraged. It is to discourage. Okay. But at the same time, stop the pollution in the society. Illicit smuggling and all will not happen. So ultimately, all these things in the societies are maintained only to keep the society, people in the society in a civilized manner. Civilized means engaged in performing devotional service. That life is called civilized. Anything else is uncivilized. So if one is engaged in performing devotional service, one is to make an attempt to become a devotee of the Lord by rendering service unto the Lord or rendering service unto the representative of the Lord. Take association of such wonderful devotees who are performing devotional service, round the clock without cessation. Then all kind of deterioration will be stopped automatically in the life, and they will be established purely on the devotional service platform. After all, for the soul to exist, we need a devotion, we need a platform from where it can render service, and that platform is called a devotional service platform. Only on that platform the soul can survive. Devotional service is the means of survival of the soul. We say survival of the fittest here. Even the fittest cannot survive because he will also die. The birth, old age disease cannot be conquered by this so-called fittest survivor in the society. How long he has been fittest? There are so many fittest survivors we have seen in the society. Everybody died. They don't have any history or record also. But the true survivor platform is devotional service. When you are established in the platform of devotional service, that is a means of our existence, that is a means of our survival. This survival is a successful survival. Blissful, happy existence of the soul is only in the devotional service to the Lord through his representative, the bona fide spiritual master. You can be the householder, you can be a brahmachari, you can be the sannyasi, graheta ko, vaneta ko, sada hari boleta ko. After all, the purpose is that you have to be a devotee of the Lord. Krishna Prabhupada says that every living entity is born Krishna conscious. They're already Krishna conscious, but only the awakening of the Krishna consciousness is, required. Awakening of Krishna consciousness means engaging the soul in the devotional service, okay, by hearing and chanting the holy name of the Lord. Simply you stand anywhere on the surface of the earth and shout Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So many unlimited souls, living entities will be engaged in the devotional service by hearing this good vibration. Just see how freely it is available and how without any bias, so many living entities, birds and beasts and insects and whatnot, even the persons who gave up their body and ghosts roaming around in the subtle body, everybody is benefited. Simply anywhere you stand and chant this holy name loudly. This is the power of devotional service. This is the power of devotional service. So that much spontaneous attraction should be there, because Krishna is not different from the holy name. As soon as you chant the holy name, Krishna is there. And jahan Krishna, wahan nahi maya radhikar.
Where there is Krishna, there cannot be darkness, ignorance, or Maya. The three modes of material nature cannot influence where the chanting of the holy name is going on. You can see the so-called Karmi people, when they come to ISKCON in the evening or whenever there is Kirtan is going on, as soon as they come inside and join the Kirtan, they raise their hand and jump in ecstasy and chant. Where from the ecstasy come to this Karmi sinner? Huh? Because the devotional service is unchecked. You may be a sinner, you may be a karmi, but when you come in the association of the devotee and dance and chanting and jumping in ecstasy, that is totally a different this thing. That is devotional service platform where he revives his consciousness. That time he is a very pure devotee and eligible to give association. In the association of devotees, only one can give and take association. So this is most important thing, that one is that very easily any living entity, one who has tongue and cannot vibrate the holy name, can also be engaged in the devotional service of hearing the holy name of the Lord. And human form is given to chant the holy name of the Lord. Out of 8,400,000 species of life, only 400,000 species of life can vibrate their tongue in chanting the holy name of the Lord. Other 8 millions is supposed to hear. And this 4 million should propagate to vibrate this sound all over the universe. But in that, only on the earth we human beings are there. Okay, out of this 400, there are Kinnaras, Kimburusha, sorry, not Kimburusas, Kinnaras and Vidyadharas, Charanas, Indra, Chandra, Vayu, the Swargaloka Vasis, all they are also human form only, but they are not vibrating the holy name for delivering all other 8 million species of life who has tongue. But this human being can alone do that. That is why Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has incarnated on this particular earth, especially on the Bharatavarsha. And he said, Bharata Bhumile Hoile Janmayara, Apna Sartha Karo, Karo Paropakara. Become Krishna conscious by associating with the spiritual master and go and vibrate the sound of holy name all over the world, in nook and corner of the world. You know, what is that called? Nagaradi Grama Morana. Chant Jaya Sachinandana Gaurari in nook and corner of the village. That is the duty of the person as a human being got birth, especially on this Bharatavarsha. And this is our duty, to propagate the holy name of the Lord. You don't need to call and preach. You can simply chant loudly and move wherever you go. You are preaching already. Best preaching. 10 times benefit you are getting, and unlimited living entities are getting liberated. Either they get a human form of life immediately, or they will be going to Vaikuntha. One of these two things will certainly happen, believe it or not, because you are under the bona fide guide and you are chanting the holy name of the Lord. You are born preacher, because that's the means of existence of ourselves. That is the devotional service. And the easiest devotional service, without spending a single penny, you can do it. That is chanting Hare Krishna Mahamantra. So that is the transcendental attraction of the beauty of the Lord. Every moment that we are chanting the holy name, we are benefited immensely, and many millions of living entities are also benefited by that. This is doesn't matter, even in the human form, if you are low born, chandala, prostitute, or anything, nothing matters at all. Nothing matters. Unbelievers, or you may got birth in a family of atheists, or you may got birth and you happen to be forced by the trick of the society into prostitutes. Nothing matters. You can achieve perfection of life only by simply taking the shelter of unalloyed devotional service to Krishna. This is specified in Bhagavad Gita. Bhaktyam Mamapi Janati. Very, very easy. Because when you take to the devotional service, there is no impediments. There is no impediments. Your birth, your degraded situation in that society, you are being poor or you are being rich, you are being educated or you are being illiterate, nothing is going to be impediment in the path of true progress in achieving the real goal of life. This will go on swiftly. That is why Bhakti Siddhanta Saraswati said, close your eyes and run in this devotional service. You will not fall. Guarantee is given by the Acharya Parampara. Guarantee is given. So, whether it is Dwaraka or it is in the material world of Kali now where we are, doesn't matter. All that we need to do is simply engage ourselves in the devotional service to Krishna through the guidance of bona fide spiritual master.
That is the, advanced civilized way of life. Thank you very much. Any questions or comments or realization, please share with us. Haribol. Haribol. In Devaloka, the Devas are not chanting, they are enjoying only material service. Yeah, Yes. they are enjoying because there is a higher sense enjoyment is given that you cannot really sacrifice anything. Okay. There is a very superior, very much exalted level of their body, their beauty, their aromas, and the way they enjoy the sense gratification. The whole human being, what we are experiencing is nothing in front of a little bit of what we get in the Swargaloka. Okay. So how can they take to devotional service? Janma, Aishwarya Sruta Bhiri, Etamana Mahapuran. Kuti Devi is telling this getting birth in a high exalted family, aristocratic family, richness, beauty, and this education, all these things only increase pride and averse to devotional service, and it will not be favorable to devotional service. Okay. Even the richness is not favorable. But Prabhupada says there are two kinds of richness. One richness is the money, wealth given by Durga. That is to entangle you in the birth, death, old age, disease. That is to keep you away from the devotional service. What Kunti Maharani is mentioning, Aishwarya, that Aishwarya. There is another wealth which is given by Lakshmi Devi. So there are two persons who can give you wealth. One is the worshippers of Durga is getting wealth. Another is the worshippers of Lakshmi Narayana or Radha Krishna or Sita Rama. They get their wealth. So the devotees, when they get wealth, it is Lakshmi, because the devotee knows how to engage it in the service of Krishna. But fortunately, in our 400 form of Brahmas in this universe, Maya Devi, she is also a devotee. She has been initiated twice. I was discussing with Santagopi and she was telling yesterday. The twice she was initiated. Once she was initiated earlier, and then again she was initiated by the same Brahma as a Haridas Thakur. Haridas Thakur. She was initiated with the same chanting the holy name of Hare Krishna Mahamantra. If you come to Mayapur, Rajapur, Jagannath Mandir, there you can see Guru Maharaj has established a very beautiful, the Maya Devi called Simantini Devi, her name is. So, Shimanta means that kumkuma which they keep on the forehead. Lord Chaitanya kept the kumkuma on the forehead of her. And then she's chanting at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. You can see that Shimantini Sri Chaitanya Mahaprabhu deities and the temple there being worshipped every day. And she is holding the chanting bead and chanting the holy name of the Lord, sitting at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu is blessing her like anything. So, our Maya Devi, in this universe, even materially speaking, everything is created by her and maintained by her and induced the living entities. She is a pure devotee of chanting the holy name of the Lord. So we can use anything and everything in the devotional service only in this universe. Other universes, there are certain things that we cannot use. But here you can use because the Maya herself is chanting the holy name and she is a devotee. She is our God sister. Not God's sister, at least she's our sister. Because in our parampara, she has taken the initiation of the same chanting the holy name of the Lord. So this is our fortunate position. Okay. Thank you very much. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji. Yeah. ये श्लोक पढ़ने से और इसका परपट जो है ये समझने से मन एकदम विचलित हो जा रहा है, ये समझ में नहीं आता है। एक जगह लिखा हुआ है कि समाज के अंदर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। ये इस माने भागवतम से ये कहा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने से कि निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल, नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्या तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकती है। यदि तो अच्छा कर्म नहीं करके हम गलत कर्म भी करें और भगवान को भजते रहे तो उससे हमारा जो है सो मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। यस, ये जो प्रोस्टिट्यूट क्या बोलते हैं उनको, वेश्या बोलते हैं ना जी,
हाँ, ये वेश्या को पालन करता है गवर्नमेंट, क्यों पालन करता है उस समय पे? क्या है, ये जो आजकल सभी ट्रैवल करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इसलिए नहीं समझ में आता है। लेकिन उस समय जमाना पे वर्णाश्रम धर्म था, तो वर्णाश्रम धर्म में केवल जो वैश्य लोग हैं वो लोग घूमता था इधर उधर। वो लोग एक सिटी से दूसरा सिटी में जाते हैं और अपना सामान को बेच करके पैसा बनाते हैं और वापस आते हैं। सो कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है उस बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस ट्रिप के अंदर, और उनको जो है रेगुलर सेक्स करने का उनका मौका नहीं मिलता है। और वो चैंटिंग तो करते नहीं जो कि उन मन को शुद्ध करें, इसलिए वो क्या करेंगे, वो लड़की ढूंढेंगे। और वहां पर अगर गवर्नमेंट ने कोई वेश्याओं को पालन नहीं किया एक जगह पे, ये क्या करेंगे, कोई परिवार वाला बच्ची को जाकर के छेड़ेंगे। तो इस तरह जो है समाज का जो अच्छे पवित्र बच्चा है, पवित्रता है, वो खो जाता है। इसलिए वो सोसाइटी को पवित्र बनाए रखने के लिए ऐसे बिजनेसमैन आता जाता रहता है, उनके लिए एक कॉर्नर पे कहीं एक स्ट्रीट बना के उसमें घर बना के दे देता है गवर्नमेंट वेश्यों के लिए। तो ये लोग जाकर के उधर वेश्यों के पास जाएंगे ताकि ये अपना सोसाइटी के लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे। तो इस तरह का एक समाज था। ये तो 5000 वर्ष पहले भी था, कृष्ण भगवान ने भी वो उसको मतलब स्वीकार किया हुआ है ताकि सोसाइटी को बनाए रखे। जिस तरह जेल रखता है गवर्नमेंट, जेल इसलिए रखता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको अंदर डाल के अलग से रखें, नहीं तो वो समाज के बीच में रहेंगे तो पूरी समाज डिस्टर्ब हो जाता है उनसे, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। ऐसे ही ये लोग भी इनको अलग रखने का, ये लोग गलत नहीं है, जो आते हैं बिजनेसमैन बाहर से वो गलत है, उनके लिए इनको रखा जाता है। तो इसलिए ऐसा रखने से क्या, ये सोसाइटी का वो बना रहता है। एट द सेम टाइम वो चाहे प्रोस्टिट्यूट हो या चंडालो हो, वो कोई मान्य नहीं रखता, क्योंकि वो तो देख के ऊपर डिपेंड करता है और हम देख स्वयं है ही नहीं, इसलिए हम जो है भक्त हैं। तो जब अहितु की अप्रतिहता, भगवान का जब भक्ति भावनामृत में अगर रहेगा, वो चाहे वेश्या हो या कोई चंडाला, चंडाला मतलब कुत्ता को भी खाता है वो आदमी, उसको बोलते हैं चंडाल। सो वो गया गुजरा जो अपना शूद्र से भी गया नीचे गिरा हुआ इंसान, उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। नास्तिक से भी नीचे है वो, नास्तिक से भी नीचे है, मतलब वो मनुष्य रहने लायक है ही नहीं, जो कुत्ता को भी खाता है, तो उसको बोलते चंडाला, सबसे नीचा। तो वो भी अगर भक्त बन जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो ये उसको भक्त बनाने के लिए उसको भी काबिलियत है, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। समाज की नजरों से वो गिरा हुआ हो सकता है, लेकिन भगवान की नजर से कोई गिरा हुआ नहीं है। भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वो गिरा हुआ इंसान हो या वो बहुत बड़ा इंसान हो, इससे कोई मायने नहीं रखता भगवान के लिए। भक्त्या माम अभी जानाते, जो भक्ति करता है उसके लिए भगवान स्वयं मौजूद होते ही है। इस तरह वो लोग भी अपने भगवान की भक्ति भावनामृत में रह के भक्ति करने से वो अपना जो गिरा हुआ स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल सही दिया हुआ। I want to add. या प्लीज। प्रभु एक मिनट, माता जी कुछ बोले। No, I want to actually speak on the purport. या Prabhu asked the question. Yeah, this is the one he is asking. Sunil Prabhu, जाइए, continue. Ask him to ask, yeah. हाँ पूछिए, बोलो प्रभु। हाँ, तो बोलना ये है प्रभु कि हम लोग जो सुबह उठ करके स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव में लगे रहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और ये जो दिया हुआ है इससे ये प्राप्त होता, माने इसका आशय ये निकलता है, सेंस ये निकलता है कि हम गलत काम करते हुए, हम झूठ बोले, घूस ले, मदिरा पान करें, और करते हुए फिर अगर भगवान का वो 9 जो डिवोशनल नियम है उसको फॉलो करें, तो क्या हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? I want to respond. I want to give a purport. I want to explain the purport. Okay. Give. Okay. The way the purport is explained is very nice. Where Srila Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai. Om Ajnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurman Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. अभी
in this purport, there is a pastime which is being described, and the pastime is never touched. I don't know why. Can you go down for the pastime, which is given by Prabhupada? There is a person called Vilvamangala. I don't know whether to speak in Hindi or English. In Hindi, you try to speak Hindi. So okay, ये इधर देखिए, इधर एक बिल्वमंगल ठाकुर का कहानी लिखा है. वो बड़ा आचार्य है और वो विष्णु स्वामी संप्रदाय से है, हमारा संप्रदाय से नहीं है. वो पहले गृहस्थ था, वो बिजनेसमैन नहीं था, कुछ नहीं था. वो प्रभुपाद पहले लिखता था, थोड़ा आदमी को एक महिला से घर में उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो वो जाकर दूसरा लड़कियों को फटाएगा, उसको पड़ोसी को फटाएगा, नहीं है तो उसको ऑफिस में, रोड में किसी को फटाएगा. तो इसीलिए वो प्रोस्टिट्यूशन का एक मार्केट गवर्नमेंट रखना था, वो लीगल कर दिया. तो उधर जाएगा मार्केट में, वो अवेलेबल है, तो ये अच्छा लड़की को वो छीनेगा नहीं. दूसरा एक एग्जाम्पल प्रभुपाद ने देता है, गवर्नमेंट ये दारू को इलीगल कर दिया तो ब्लैक मार्केट में करेगा, वो किसी को पता नहीं है, बहुत गलत तरीका से हो जाएगा. लीगलाइज करने से वो मॉनिटर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन मॉनिटर. ये गवर्नमेंट के विजन से बोला हुआ है, गवर्नमेंट के विजन से बोला हुआ है. वो दारू को भी लीगलाइज करना है, थोड़ा सोसाइटी में थोड़ा लोग को दारू पीना ही पीना है. दारू को मना करने से आप रुक नहीं सकते, उसके बदले लीगलाइज कर दिया तो आप मॉनिटर कर, गवर्नमेंट कैन मॉनिटर, गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकता है क्या गलत रास्ता में जा रहा है, कोई सही रास्ता में जा रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए, फिर वो मॉनिटर कर सकते हैं. तो इसीलिए दारू को भी बोला है इधर, एंड इसको भी बोला है. इसमें आपका प्रश्न ये है, तो भक्ति और ये उसका ऑक्यूपेशन, उसका क्या काम एक आदमी करता है और उसका भक्ति का संबंध आप पूछते हैं. सो इसमें एक लीला लिखा है, विष्णु स्वामी संप्रदाय में बिल्वमंगल ठाकुर था. वो ऐसा एक बहुत अच्छा खानदान का आदमी था, बहुत अच्छा बड़ा खानदान है. एंड उसका बहुत सुंदर पत्नी भी था. वो फिर भी वो एक नदी था, वो नदी के उस पार एक प्रोस्टिट्यूट था, उसका नाम चिंतामणि. तो वो बहुत वो चिंतामणि को पसंद करता था, इसीलिए वो बार बार उधर जाता था. एक दिन ये बिल्वमंगल ठाकुर का पापा का श्राद्ध है, सो घर में वो श्राद्ध बना रहा था. तो श्राद्ध बनाने के समय उसको चिंतामणि को याद आ गया, उसको फिर वो ब्राह्मण से बोला, वो पंडित से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, पूरा मंत्र पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कर दो खत्म, ऐसे बोला. ऐसे बोलकर वो जल्दी जल्दी वो श्राद्ध को खत्म कर वो जाने के लिए तैयारी किया, जाने के लिए उठाया. उस समय बहुत बड़ा बारिश आ गया, बहुत बड़ा बारिश है. वो बारिश में वो फिर भी उसको चिंतामणि को याद में वो जल्दी गया बारिश में. फिर नदी था, नदी में ये बोट नहीं था, नौका. सो नौका को ढूंढा, नौका का आदमी नहीं था. वो बोला ओके मैं स्विम कर चलूंगी. सो वो स्विमिंग करने के लिए गया, बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, बाढ़ ना वेल्लंगाने बाढ़ आ गया. सो हम क्या करेंगे, किधर लकड़ी को पकड़ना, एक लकड़ी आया, उस लकड़ी को पकड़कर वो स्विम कर उस पार गया. वो बाहर आने के बाद वो देखा, हाँ वो लकड़ी नहीं, तेरियों. You want to say? I can stop. No. लकड़ी சொன்னா மரக்கட்டைன்னு அர்த்தம், அதனால மரக்கட்டை இல்லன்னு. वो लकड़ी को पकड़कर उस पार आया. उस पर आने के बाद वो देखा वो लकड़ी नहीं है. I want to bring, I don't know, I have my own way of saying. Okay. It's okay, you can tell. If you know the past time, you tell. No, go. Okay, Hare Krishna. Go ahead, no. Why you are? And वो देखा था, वो मरा हुआ एक आदमी था, वो लकड़ी नहीं था.
तो वो देखा शो ये क्या है, ओके एनीवे उसको परवाह नहीं है, फिर भी चिंतामणि का घर में जाना है। सो बहुत जल्दी से वो निकाला उधर से, एंड उधर से निकाल कर चिंतामणि को घर में गया और नीचे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खोला क्योंकि इतना बारिश का शब्द है, उसमें चिंतामणि ऊपर था, ऊपर तालाब में था, इसीलिए वो सुना नहीं था। तो वो क्या किया, वो खटखटाया खटखटाया, वो ओपन नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा ओके ये पेड़ के ऊपर जाकर अंदर जाएंगे ऊपर से करके, पेड़ के ऊपर गया। वो पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिला, कैसे पेड़ में आधा में फंस गया। फिर देखा एक रोप था, एक रस्सी, वो रस्सी को पकड़कर वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद चिंतामणि के घर के अंदर जाने के पहले रस्सी को छोड़ना है, वो देखा वो रस्सी नहीं था, वो सांप था। सो ऐसे बनाकर चिंतामणि को अंदर आ गया, आकर पूरा पूरा गीला हुआ था। फिर चिंतामणि पूछा ये क्या है, वो बड़ा बड़ा आदमी है, जमींदार है, बट अभी देखो वो खिड़की से आ रहा है। सो सॉरी नॉट दिस थिंग से विंडो से आ रहा है। सो पूछा क्या हुआ, कैसे आया हुआ, इतना बारिश है, कब वो नदी के पार से कैसे पार किया, बोट भी नहीं होगा, इतना अंधेरा में कैसे आया, अब श्राद्ध है, आपका पापा का श्राद्ध है, आज नहीं आएगा करके हम सोचा। ना चिंतामणि, आपको पता है आपको देखने के लिए मैं क्या क्या किया, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर कर पूरा पूरा आया। फिर बोट में नहीं था, नौका नहीं था, इसीलिए मैं एक डेड बॉडी को पकड़कर ये जड़ आई मीन मरा हुआ शरीर को पकड़कर मैं पार किया। फिर उसके बाद देखो आप सांप को पकड़कर इधर आ गया चिंतामणि। सो वो चिंतामणि बहुत अच्छा कृष्ण भक्त था, उसको कर्म के वजह से ऐसे पाप जन्म मिलता है, कर्म के। सो पापी सोचकर हम मना करते हैं, हमारा समाज मना करता है, भगवान मना नहीं करेगा। हमारा पूर्व जन्म के पाप से एक आदमी को ऐसा मिलता है, वो जन्म से उसका पापा मम्मा क्या बोला है उसी तरह वो जिएगा ना। सो उसका मम्मी पापा ये बोला है, ये प्रोफेशन दिया है, तो वो कर्म के वजह से हुआ है। सो लोग, समाज वाला लोग सोचेगा ये बहुत अच्छा कर्म के साथ मिलन करेगा, पापी जन्म के दूर करेगा, ऐसा नहीं है भगवान। तो क्या हुआ, सो चिंतामणि पूछा अब्बा ये वो कृष्णा, ये मेरे छी, ये जड़ शरीर जलना वाला है, ये जड़ शरीर में मल मूत्र है, ये शरीर के लिए आप इतना किया, तो वो सच्चिदानंद विग्रह कृष्णा, उसके लिए आपसे आप इतना चाहता है ये शरीर को, ये शरीर मलमूत्र का एक बैग है, इसको लेने के लिए आप इतना करते हैं। तो हमारा कृष्णा तो सच्चिदानंद है, उसका पाँव के लिए इसमें आपको थोड़ा आपको भक्ति है तो आपको जिंदगी सफल हो जाएगा करके बोला। वो प्रोस्टिट्यूट उसको शिक्षा दिया। अब स्वामी बिल्वमंगल ठाकुर पहले बार ऐसा शिक्षा, उसको बहुत पसंद है भी, वो उस प्रोस्टिट्यूट उसको शिक्षा देता है, तो छी ये शरीर के लिए आप इतना किया, तो उस भगवान के ऊपर आप है, तो इसके आपको जिंदगी सफल हो जाएगा। बिल्वमंगल ठाकुर को वो इतना खानदान से मिला, वो शिक्षा नहीं मिला, बट वो एक प्रोस्टिट्यूट से भक्ति का शिक्षा मिला उसको। सो वो पूछा ये सही है क्या, कृष्णा किधर है, कैसा ये मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा, आपसे इससे ऊपर कुछ है, या भक्ति इससे ऊपर है, इतना अच्छा है, भगवान के ऊपर होना चाहिए ऐसा करके वो चिंतामणि बोला। फिर उन्होंने वो उसको पूरा आंखों खुल गया। सो उन्होंने नमस्कार किया, मुझे आंखों खोल दिया, मैं कृष्ण को ढूंढ कर चलेंगे करके वो वृंदावन को शुरू किया यात्रा। तुरंत वृंदावन को कृष्ण को ढूंढ कर चलना लगा। वो जाने के वक्त क्या हुआ, वो चला जाने के वक्त उधर बीच में एक बहुत अच्छा एक शूद्र का घर था, बहुत अच्छा खानदान का शूद्र है, शूद्र में भी अच्छा होता है उसमें भी। सो उसमें एक उसका एक मैन और पत्नी था। वो पत्नी वो नदी में पानी लेने के लिए गया, वो नदी से पानी लेकर आया, वो बहुत सुंदरी था, उसके पीछे पीछे जाने से इसको बहुत काम इच्छा है ये बिल्वमंगल ठाकुर को, वो भी कर्म की वजह से आता है, बट
मैं एक और कहानी इसके साथ साथ बोलेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा पूरा का। सो उसको बहुत इच्छा लग गया, चिंतामणि को याद भी आया, चिंतामणि को याद नहीं आया, ये लड़की को चाहता था। सो उसके पीछे पीछे गया, उसका पीछे पीछे जाकर उसको घर, छोटा घर था मिट्टी का, उसमें गया। तो उसका वो लड़की डर गया, फिर वो जाकर उसको पति से बोला ये आदमी मेरा पीछा पड़ा है। तो वो जाकर उसका पति पूछा क्यों मेरा पत्नी के पीछे आते हो, बहुत सुंदरी है, इतना अच्छा सुंदर पत्नी है आपको, मुझे मन चाहता है उसको, चाहिए मुझे, मन चाहता है उसको। तो उसका पति बोला ऐसा आपको चाहिए अदिति देवो बाबा, आपको चाहिए तो मैं आपको मेरा पत्नी दे दूंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो देखा, छह कितना अच्छा है ये आदमी, लोग मेरा मन ये क्यों काम के पीछे पड़ता है। सो वो बोला वो लड़की से मुझे एक चाहिए आपसे, इसीलिए आप मुझे हेल्प करो। हाँ, सो वो लड़की पूछा क्या चाहिए, वो बोला आपका हेयर पिन है ना, वो सिर में डालता है ना हेयर पिन, वो हेयर पिन मुझे दे दो। तो वो ये हेयर पिन उसको सिर से निकाल कर दिया, वो बालों के डेकोरेशन के लिए होता है, वो दिया। वो लेकर उसको अपना आप का आंखों निकाल दिया, अपना आपको आंखों, ये सिर्फ ये आंखों के वजह से, सिर्फ ये आंखों के वजह से कृष्णा के मन कृष्णा के ढूंढने के बदले ये क्यों लड़के के ढूंढता है, लड़की को क्यों के लिए ये आंखों इधर देखता है, तुम्हें चाहता है। ये जिस पहले ही मुझे शिक्षा चिंतामणि से मिला है, मलमूत्र का शरीर है, वो बैग है, सबको एक ही है चीज अंदर, सिर्फ बाहर कवर तो अलग अलग, महिला जेंट्स ये जानवर ऐसा बाहर अलग है, बट अंदर तो मल मूत्र क्या है उसमें, बोन्स फ्लैश यूरिन एंड पस ना। थोड़ा ओपन करने से हमको उल्टी आ जाएगा, थोड़ा वो खुल गया तो उल्टी आ जाएगा, वो बैग खुल गया तो। सो वो उसका आंखों निकल गया, निकाल कर उसको नमस्कार किया, आप बहुत अच्छा आदमी लोग है, हम बहुत बुरा है, हमको कृष्ण भक्ति चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं कृष्ण को ढूंढ कर वृंदावन जाती हूँ करके वो अंधा अंधा से जाने लगा। सो कृष्णा थोड़े देर जाने से लोग के पूछ कर वो वृंदावन गया, वो वृंदावन में बैठकर कृष्णा 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 नाम जपने लगा। फिर कृष्णा आप किधर है करके, फिर उसका हेल्प करने के लिए, उसको आंखों नहीं है, सो कृष्णा उसके लिए रोज दूध, कृष्णा एक छोटा बच्चा का रूप धारण कर रोज आकर उसका किधर उधर जाना है उसको हेल्प करने के लिए आया, उसको पकड़ कर इधर उधर जाएगा और उसको रोज खाना लेकर देगा। सो ऐसा कृष्ण को डायरेक्ट संबंध मिला। हाँ, फिर चिंतामणि भी वो ये बहुत बड़ा भक्त बन गया वृंदावन में। बिल्वामंगल ठाकुर अभी भी 700 इयर्स वो जिया, दक्षिण भारत में भी आया, गुरुवायूर करके एक मंदिर हम शादी किया उधर, कृष्ण के मंदिर, उधर भी वो 300 वर्ष उधर जिया। ऐसा पूरा भारत में इम्पोर्टेंट कृष्णा टेम्पल्स में वृंदावन और ये थोड़ा थोड़ा जगह में गया है। प्रभुपाद बहुत जगह से इसको कोट करता है, कैसे कृष्ण को टच करने से ये काम लोग चले जाता है। वो महिला लोग का प्रॉब्लम नहीं है, महिला लोग सेवा के लिए है। आप घर में एक लड़की को रखकर उसको खाना पीना देकर उसको इस्तेमाल कर बच्चा पैदा करते हो, एक ही लड़की को करते हो, वो क्या है? आप भी गुलाम बनाकर रखते हैं ना, वो भी क्या है? आपको खाना देकर आपको फ्री में मिलता है ना, मुफ्त में। बट वो अच्छा है, क्यों के लिए एक रूल्स रेगुलेशन के अंदर डालने से वो रेगुलेट हो जाता है। वो रूल के बाहर हम बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, कोई भी शादी नहीं करना है करके गवर्नमेंट रूल डाला तो क्या होगा बोलो? जिंदगी गवर्नमेंट एक रूल डालता है, महिला को क्यों इस्तेमाल करता है जेंट्स, ये गलत है, इसीलिए बच्चा पैदा करने के लिए महिला बहुत सफर करता है, इसीलिए गुलाम कोई किसी को गुलाम नहीं है, इसीलिए शादी कोई नहीं कर सकता करके बोला तो क्या हो जाएगा? बिना शादी सब रहेगा, है ना। ये शादी एक इंस्टीट्यूशन है, वो अच्छा तरीका से जीने के लिए जी। उसी तरह ये मार्केट में प्रोस्टिट्यूट रखता हुआ है, क्योंकि लिए अच्छा लड़की को जाकर नहीं छीनेगा, नहीं है तो पड़ोसी के वो फटाएगा। देखो अभी प्रोस्टिट्यूशन को
गवर्नमेंट इलीगल कर दिया तो ये सोसाइटी में साधारण फैमिली का गर्ल्स तो मिनी स्कर्ट पहनकर इधर उधर घूमता है, शादी के पहले ही सब कुछ हो जाता है। हमको पता है, हम सोसाइटी में हैं, आप ये परिवार के अंदर हैं, हम तो आईटी में काम कर रहा था, हम देखा कितना ऐसा है, क्योंकि लिए ये रेस्ट्रिक्ट करने से वो ज्यादा हो जाएगा। सो दूसरा एक लीला है, हम अभी अभी गुरु महाराज के क्लास में सुना है ना, वो है हरिदास ठाकुर एक मुसलमान था, एक जगह बेनापोल करके एक जगह में आया, उधर एक बहुत अच्छा भागवत क्लास दिया था उस समय। एक आदमी था उधर, ये हमारा हरिदास ठाकुर है, हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाला। ये बिल्वमंगल ठाकुर बहुत दूसरा विष्णु संप्रदाय से है, विष्णु स्वामी संप्रदाय से है, बट हरिदास ठाकुर था उस समय। एक आदमी रामचंद्र खान था, उसको बहुत जलन हो गया, क्योंकि ले हरिदास ठाकुर मुसलमान का फैमिली से है, उसको संपत्ति कुछ नहीं था, बट बहुत लोग उसके पीछे पड़ा था। बट ये रामचंद्र खान बहुत दान मान करेगा, ये करेगा, बहुत बड़ा जमींदार है, बट उसको पीछे इतना नहीं है। सो उसको वो ग्राम के हीरो की तरह था, बट सब अभी हरिदास ठाकुर के पीछे पड़ गया भागवत सुनने के लिए। सो ये रामचंद्र खान को बहुत जलन में वो बोला, बहुत सुंदरी एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाया, फिर बोला आप जाकर उसको फटा लो। फिर क्या करो, वो गिर जाएगा, तो सबको पता लग जाएगा वो असली नहीं है। ये करके बहुत पैसा दिया, अगर वो बहुत सुंदरी है। वो गया, हरिदास ठाकुर जब करता था, हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख हरिनाम करेगा। अच्छा, एक 132 राउंड्स करेगा रोज, 132 राउंड्स, क्योंकि लिए वो मुसलमान है, इसीलिए कुछ कर्म नहीं है, मंदिर में उसके प्रवेश का अनुमति नहीं है, इसीलिए उसको कुछ कर्म नहीं है। वो पूरा दिन सिर्फ जप करेगा ना, 3 घंटा सोएगा, 1 घंटा नहाएगा खाएगा, बाकी पूरा वो 16 घंटा के ज्यादा वो माला करेगा। सो इसीलिए वो गया, वो प्रोस्टिट्यूट गया। सो हरिदास ठाकुर ने बोला, वो लड़की बोला, आपके ठाकुर आप भी बहुत उम्र में कम है, सुंदर भी है, मैं आपके चाहती हूँ। वो बोला ओके, आप बैठो, मेरा इधर बैठो दरवाजा में, मैं अभी जब खत्म करके आएंगे करके उच्च ध्वनि से जब करता था। फिर वो एक रात पूरा वो बैठा था, फिर सुबह हो गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत माला करता है ना, वो माला खत्म नहीं हुआ। सो वो बोला माला खत्म होने से आपको छीनेगा करके। सो सुबह हो गया। सो वो बोला ठाकुर आप बोला मुझे मेरे साथ आएगा ना, सॉरी आज मेरा माला नहीं खत्म हुआ, आप कल आओ, मैं जरूर जल्दी खत्म करके आपके साथ देंगे। सो वो चले गया। हरिदास ठाकुर का एक छोटा सा कुटीर था, उसके सामने एक तुलसी था। सो वो लड़की आया था, वो तुलसी को परिक्रमा कर उसके दरवाजे में आकर फिर बैठा, एक ही छोटा सा रूम है, उधर बैठकर बहुत अच्छा दिखाया, स्माइल किया, ये किया वो किया, बहुत अच्छा लड़की का क्या क्या भाव है वो पूरा दिखाया। हरिदास ठाकुर ने बोला मैं खत्म कर आऊंगी, बैठो। फिर उच्च ध्वनि से, उसको बहुत विश्वास है हरिनाम से, हरिदास ठाकुर को। सो अब हरिदास ठाकुर हरिनाम जप करने लगा, पूरा रात हो गया। सो वो लड़की बोला मैं सोचा आप अच्छा भक्त है, झूठ नहीं बोलेगा, आप क्यों झूठ बोलते हो, आप मेरे साथ देगा करके बोला, आप क्यों झूठ बोलते हो। वो बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोला, मैं बोला जब खत्म होगा उस समय आप साथ देंगे। एक्चुअली भक्त को जब खत्म नहीं होगा 24 घंटा हम करेंगे, हम सिर्फ 16 माला का आदमी नहीं है, 16 माला करेंगे बट 24 घंटा कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा जब। सो वो बोला जब भी खत्म होगा उस समय आपको साथ देगा। तो फिर भी 30 तो जरूर कल में आपको साथ देंगे, चलो। तो तीसरा दिन वो आया, आकर उधर घर में आया, फिर बैठकर देखा ये इतना अच्छा आदमी है, मैं इतना अच्छा लड़की हूँ, फ्री में मुफ्त में, मेरा पैसा देने के लिए बहुत जमींदार लोग बहुत संपत्ति दिया है, वो बहुत अमीर है वो लड़की, वो प्रोस्टिट्यूट बहुत अमीर था। सो इतना था, मैं इतना करती हूँ, ये इतना साधु है, मैं कितना नीच है, इतना अच्छा साधु को फटाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, छी मैं बहुत पापी हूँ, मेरा कर्म के वजह से मैं इसको ये जन्म मिला, ये साधु के साथ मुझे अभी मुझे मिलन हो गया कृष्ण के करुणा से, ये मैं छोड़ना नहीं है करके वो रोकर
उसके पाँव में पड़ गया। पढ़कर बोला, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, ये रामचंद्र खान मुझे बहुत ज्यादा पैसा देकर आपके साथ भेजा आपको फटाने के लिए। आप बहुत पवित्र है, मैं बहुत पापी हूँ, ये पापी जन्म से मुझे ये पापी जन्म मिला, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्ति कर दीजिए करके। हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है, आप एक काम करो, आपको संपत्ति पूरा डोनेशन कर आओ, मैं आपको दीक्षा देंगे, मुझे दीक्षा दे दो करके वो पूछा, मुझे शिष्य बना दो। सो वो जाकर तुरंत उसका बाल पूरा काट लिया, क्योंकि लिए वो सुंदरता का वजह से पीछे पड़ता है। बाल एक सुंदरता का एक लक्षण है। तो वो त्याग किया, फिर पूरा मंदिर को और ब्राह्मण को सबको वो उसका संपत्ति दान कर वो आया। सो हरिदास ठाकुर उसी का दिन सुबह वो गंगा में नहा कर आया, उसको दीक्षा देकर वो बोला, ये कुटीर और ये तुलसी को पूजा करो, इधर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुलसी को परिक्रमा करो, तुलसी को पूजा करो, ये घर में रहकर, ये घर आपका होगा, ये इधर जाकर आप जप करो, मैं चाहती हूँ इधर से करके। वो उधर से बेन्नापोल से निकलकर एक हरिदासपुर करके एक सो वो लड़की उधर बहुत अच्छा महान बन गया। सब अच्छा परिवार को लोग आकर उसको नमस्कार किया, क्योंकि हरिदास ठाकुर का शिष्य बन गया, दीक्षा ले लिया। दीक्षा का इतना अच्छा वो अच्छा सत जन था उस नगर में, क्या सज्जन था बेनापोल में, सब ये उसको माना, सब उसको खाने के लिए चीज लेकर आया, एंड सब उसको साधु समझा। फिर वो भाव प्रेम उसको मिल गया, भाव और प्रेम बहुत जल्दी मिल गया उसको, भाव प्रेम। सो इसी हरिदास ठाकुर को बहुत प्रसिद्ध भक्त था। सो ये हम क्या है, हरिनाम जप करने से शुद्ध हो जाएगा। पहले एक प्रोस्टिट्यूट आता है, वो प्रोस्टिट्यूट से पहले ही आप भक्ति को मना कर दिया तो उसको मुक्ति के लिए क्या रास्ता है माँ? करुणा किधर है? भक्त का करुणा है हम प्रचार करेगा, हम नहीं देखेगा वो क्या है, वो अच्छा कर्म के आता है, वो सत आदमी को, सिर्फ सत आदमी को हम प्रचार नहीं करेगा। सबको कृष्ण का हरिनाम देने से पवित्र हो जाता है हृदय, और हृदय शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना है हम देग नहीं है, ये देग हमारा कर्म के वजह से हुआ है। एक समय अच्छा जन्म होगा, एक समय बुरा होगा। ये सोसाइटी में हमको क्या बोलता है वो सही नहीं है, भगवत गीता में क्या बोला है वही सही है। भगवत गीता में बोला है हम शरीर नहीं है, ये शरीर हमारा कर्म की वजह से हुआ है, एक जन्म में एक अलग अलग शरीर होगा। सो सेतो दर्पण मार्जनम, ये चेतना के ऊपर बहुत गंदा लगा है, हरिनाम जप करने से वो गंदा चले जाएगा और बहुत अच्छा हीरा के तरह हम चमकेगा हरिनाम से। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये महादावाग्नि, भव महादावाग्नि, ये संसार सागर है, भव महादावाग्नि वो अग्नि है, हमको जलता है। सो ये निर्वापणम, वो बारिश के तरह आएगा करुणा, कृष्ण का करुणा, हमारा काम क्रोध लोभ मोह सब चले जाएगा। तो पहले ही आप क्वालिफिकेशन लगा शुद्ध आदमी जब करना है करके नहीं, हरिनाम शुद्ध करेगा उसको। पहले ही आप मना कर दिया भक्ति, उसको रास्ता क्या है? फिर कौन उसको उद्धार करेगा? हरिनाम भक्त नहीं उद्धार करेगा तो कौन करेगा बाबा? बोलो, हम भक्त बहुत करुणा होना है। ये पापी है इसीलिए ये इसे नीचे है, ऐसे नहीं देखना है, सबको समान देखना है। पंडिता समदर्शिना है। तो कृष्ण के नाम से सब पवित्र हो जाएगा, बट उसको मौका मिलना है ना, नाम करने के लिए मौका तो दम देना है ना। हाँ, यही है, यही तत्व है इससे। तो चैतन्य कृष्णा उसको मौका देता है, इस जन्म में उसको पैदा हुआ, ये प्रोस्टिट्यूट पैदा हुआ, वो प्रोस्टिट्यूट अपना इच्छा के लिए प्रोस्टिट्यूट नहीं बनता है। किसी प्रोस्टिट्यूट से पूछो आप इच्छा से ये करते हो, वो बोलेगा मेरा कर्म है, मेरा दो बच्चा है, नहीं तो मेरा अंधा माँ है, नहीं तो मेरा माँ इसके अंदर मुझे फंसा दिया, मुझे कुछ और पता नहीं है करके, वो कर्म की वजह से आता है। आदमी लोगों को भी वो काम बहुत होता है, तो वो उसका रास्ता नहीं है, वो शादी नहीं किया है, हाँ, फिर ऐसा नहीं है तो उसको एक किसी ना किसी को शादी करवाना है,
हाँ, ऐसे ही रख दिया तो क्या होगा, वो प्रोस्टिट्यूट से जाएगा। तो यही है, हम समझना है बहुत अच्छा से। कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं है, बहुत नीचे नहीं है, बहुत बहुत ऊंचा है, हम सोचने के ऊपर ऊंचा है बाबू। हम इतना, आप धर्म क्या किया, आपको जिंदगी में पालन किया, वो सब कुछ नहीं है ये भक्ति के सामने। ये अच्छा है बुरा है के ऊपर है, अच्छा बुरा के ऊपर है, ये करुणा है, भक्ति बहुत बहुत ऊंचा है, उत्तम है। बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण में, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा सुनकर। Haribol, Rajeshwar Prabhu, I'm really sorry. Haribol, so wonderful, amazing pastime and amazing answer to the question through the pastime. Superb, thank you. You should have taken the class today. That was very nice. Anybody else has any comments or questions or realizations? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you very much for the association. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai. जय Padita Pavan Srila Prabhupada ki jai. जय Padita Pavan Srila Guru Maharaj ki jai. जय Bhagavat Satsang ki jai. जय। So I am putting this live YouTube link in the shelter group, and please tell others, those who have not joined here, to definitely listen to today's lecture. It's very, very important in the pastime. So kindly tell Deepshika and others, those who are supposed to hear this, kindly let them know, Saurav and whoever it is, and tell them to listen, those who have listened here. Vaishnav Pranam. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev vacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. And the announcement is that coming Saturday and Sunday, we are going to have, instead of Bhagavatam class, we will have the Vrindavan pastime so that we can prepare ourselves to visit Vrindavan. Every day we thought we will do, but it is impossible because our services finishes at 10:30, 11 o'clock at night. You stop the streaming and then do the announcements. Hello? Okay.